Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta. Today we are going to study CSS in advanced web designing. CSS is very important topic in HTML. Before starting, I would like to tell you one more thing that I have discussed with some students regarding lectures to be conducted in English or Hindi. According to them, it will be more convenient if I am explaining you in Hindi as well. So, from today onwards, I am going to explain you both in English as well as Hindi so that it will be beneficial for you to understand. So, let's start. In this video, we will learn what is CSS, syntax rules of CSS, and different properties of CSS and their use. Now, what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. So, what do you mean by cascading? Cascading means to enable or combine large amount of styles together in sheets. It means that if you want to give different styles like color to the text, background color, background image, underlining the text, etc., then all these styles they will be combined together in one HTML document. So this we can do using CSS. So CSS क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी अगर हमें किसी HTML डॉक्यूमेंट में अगर बहुत सारे स्टाइल देने हैं, जैसे कि किसी टेक्स्ट को कलर देना या फिर वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर आना चाहिए या फिर बैकग्राउंड में इमेज आना चाहिए या फिर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ऐसी बहुत सी स्टाइल्स जो हमें देनी है वो हम एक साथ रख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। किसका यूज करके? CSS का यूज करके। ठीक है, समझा? नेक्स्ट पॉइंट, CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen. Means how our screen will look that we can decide using CSS. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्क्रीन कैसे दिखनी चाहिए ये हम CSS का यूज करके डिसाइड कर सकते हैं। ओके, यानी हेडिंग का कलर कौन सा आना चाहिए या फिर उसके बीच का टेक्स्ट है वो कैसे आना चाहिए, बॉर्डर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सब अलग अलग स्टाइल से ये हम कैसा दिखना चाहिए अपना स्क्रीन, ये हम सब डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? CSS. नेक्स्ट, CSS gives style to HTML document. So, in short, we can say that CSS it is used to give stylish look to the HTML document. So, if you want to make your HTML document look stylish, then you can do it using what? CSS. So, अगर हमें HTML document को stylish बनाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? CSS का। समझा? तो सिंपल एग्जाम्पल है जैसे कि विदाउट मेकअप यानी विदाउट यूजिंग CSS, मेकअप करने के बाद कैसे दिखते हैं यानी CSS अप्लाई करने के बाद कैसे दिखते हैं। ओके, सो दैट इज अ सिंपल एग्जाम्पल। ओके, लास्टली वी कैन से दैट CSS saves lots of work. How it saves lots of work, this we will come to know only when we apply CSS in coding. So CSS का जब हम कोडिंग में यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि CSS अपना काम कैसे बचाता है। ठीक है, मीन्स कैसे हम लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं, काम सेव कर सकते हैं। ओके, सो समझा व्हाट इज CSS? Syntax of CSS. What is syntax? It is rules for writing CSS. So what is the rule? CSS rule set consists of a selector and declaration block. Means syntax of CSS, it has two parts. One is selector and another one is declaration block. So let us see how it looks.
So see, this is selector and this is the declaration block. And this whole is what? This is whole is the syntax of CSS. So in this selector, we are using HTML tag, and in declaration block, we are using property and value. Let us see one by one. Selector points to the HTML element you want to style. Means this selector, it is pointing to any HTML tags or HTML elements. So HTML tag, it is also called as what? HTML elements. So we can use here any HTML tags or HTML element for which you want to give style. So क्या बोल रहा है ये कि selector क्या होता है? Selector में कौन से भी HTML टैग या HTML एलिमेंट जिसको हमें स्टाइल देना है वो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं. ठीक है, सेलेक्टर के साइड में क्या लिखना है हमको? कोई भी HTML टैग या फिर HTML एलिमेंट. हमने बहुत से HTML टैग पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में. सो उसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? H1. सो इंस्टेड ऑफ H1 हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं. बहुत सारे हेडिंग लेवल्स होते हैं फ्रॉम H1 to H6. उसमें से कोई भी H1 हेडिंग लेवल ले लो सिलेक्टर में, या फिर बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, बॉडी टैग, या कोई भी फिजिकल स्टाइल टैग्स जो हमने पढ़े हैं. ऐसे बहुत से टैग्स हमने पढ़े हैं, उसमें से हम कोई भी टैग यूज कर सकते हैं जिसको हमें स्टाइल देना है. Next point, declaration block contains one or more declarations separated by semicolons. So, declaration block, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा declarations लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा declarations को semicolon से separate किया जाता है. So, इस example में how many declarations are there in this example? There are 3 declarations. Okay, so these 3 declarations are separated using this semicolons. अंडरस्टूड. सो हमने यहाँ पे 3 डिक्लेरेशंस दिए हैं और 3 डिक्लेरेशंस को हमने किससे सेपरेट किया है? सेमीकोलन से. देखो यहाँ पे ये सेमीकोलन से. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, each declaration includes a CSS property name and a value separated by a colon. हमेशा डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या लिखा जाता है? प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. सो हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू किससे सेपरेट करते हैं? कोलन से. सो वी आर सेपरेटिंग प्रॉपर्टी एंड वैल्यू यूजिंग कोलन्स, एंड डिक्लेरेशंस किससे सेपरेट करते हैं? सेमीकोलन से. ओके, सो इन दिस एग्जांपल आई एम यूजिंग प्रॉपर्टी font family and value is Arial. Next property is font size and value is 15px. What is this px? Px means pixel. Instead of px you can write pt. pt means point. So अगर मुझे px नहीं लिखना है तो मैं pt भी लिख सकती हूँ. pt होता है point. दोनों भी सेम होते हैं. Next property is color and the value is pink. So see, all these are properties and their values. In declaration block, we always use property and values, and properties and values they will be separated using colon. Lastly, we can say declaration block is enclosed within curly braces. So this is very important. We should always enclose this declaration block in curly braces. So see, this is the starting curly brace and this is the ending curly brace. हमेशा डिक्लेरेशन ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंटेक्स ऑफ सीएसएस. सो समझा सबको सिंटेक्स ऑफ सीएसएस क्या होता है? सिंटेक्स ऑफ सीएसएस में 2 पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक. सेलेक्टर में हम हमेशा वो HTML टैग्स लिखते हैं जिसको हमें स्टाइल देना है, और डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं, और हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम कोलन से सेपरेट करते हैं, और डिक्लेरेशंस को हम हमेशा सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं. समझा? Now let us see one CSS style example. So see, this is the question. If you want your paragraphs text to be displayed in red color and background of paragraph should be pink, then what coding you will write? What is the meaning of this question? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एक टेक्स्ट लिखना है जो कि पैराग्राफ में होना चाहिए. ओके, सो मुझे पैराग्राफ ये टैग यूज करना है. पैराग्राफ टैग यूज करके मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, और उस टेक्स्ट का कलर कौन सा कलर में आना चाहिए? रेड कलर में. और बैकग्राउंड ऑफ पैराग्राफ शुड बी पिंक. इसका मतलब क्या है कि जहां पे मैंने पैराग्राफ यूज किया उसी के बैकग्राउंड में, यानी उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर पिंक आना चाहिए.
पूरे स्क्रीन का कलर मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड का कलर पिंक चाहिए। सो टेक्स्ट का कलर रेड और बैकग्राउंड का कलर पिंक। तो इसके लिए हम कोडिंग कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। कोडिंग फॉर दिस क्वेश्चन, see this is the coding for paragraph tag where we want background color pink and text color to be blue. Okay, so in this example I will not write this font style because our question is only just to make the text color pink and background color, sorry, text color blue and background color pink. text color blue बोला है कि red बोला है? red. Okay, red. See, so this is simple coding. See this, in this style I have enclosed this style tag within the head tag. So actually this is the type of internal coding. Okay, so this is internal CSS. Actually in CSS there are three types, that is internal CSS, external CSS and inline CSS. From that, in this example I am using internal CSS. We are going to study these types of all CSS in next lecture, but this is just for example. Okay, so ये एग्जाम्पल में मुझे बैकग्राउंड कलर को पिंक देना है पैराग्राफ के और टेक्स्ट कलर को रेड देना है। और मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट लिखे हैं, एक H1 है जिसमें मैंने हेलो लिखा है और पैराग्राफ टैग में मैंने वेलकम टू CSS लिखा है। सो ये जो स्टाइल है ये सिर्फ इसको एप्लीकेबल है, H1 को है क्या? नहीं, मैंने H1 के लिए कोई भी स्टाइल नहीं यूज़ किया है। सो इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, चलो देखते हैं। सो सी, दिस इज द आउटपुट. Okay, I'll just refresh it. Actually टेक्स्ट कलर मैंने रेड लिखा है, राइट? इसको सेव नहीं किया, पहले सेव करते हैं फिर आउटपुट देखेंगे। ओके, आया टेक्स्ट का कलर रेड। सो सी, हेलो सिंपल इसमें आया क्योंकि ये सिर्फ H1 है तो वो H1 में दिखाई दे रहा है। और पैराग्राफ में मैंने जो भी किया था, जैसे बैकग्राउंड, सी पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर पूरा पिंक आया है और उसके टेक्स्ट का कलर रेड. सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल विच वी आर यूजिंग हियर. Okay, now let us see the next thing. I hope till now whatever I taught you is clear to you. So now my question to you is, what are different selectors in HTML? तो मुझे लगता है अभी तक मैंने इस वीडियो में जो भी पढ़ाया आपको सब समझा होगा. अगर हाँ तो मुझे लिख के बताओ different selectors HTML के. So for this, you pause your video and write different selectors of HTML either in comment box or in your notebook. Okay? तो आपको different selectors कहाँ पे लिखने हैं? एक तो comment box में लिखिए या फिर आपके notebook में लिखिए, जितने भी आपको आते हैं selectors जो हमने पढ़े थे. Okay? तो वो लिख के बताइए. फिर once you are done, then see whether you have written all these selectors. So ये selectors लिखे हैं या फिर इससे ज़्यादा selectors लिखे हैं, तो गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. मीन्स आपको सब समझ में आ रहा है. नाउ वी कैन मूव फर्दर. इन CSS syntax we have seen one declaration block. That declaration block, it is also made up of two parts. One was property and the another one was value. So now we are going to see some CSS properties and their values. See here, I have unlisted some of the CSS properties and their use. So let us start one by one. First one is color. It is used to change the color of the text. So what is the meaning of this? If we want to change color of the text, then we can do that by using which property? Color property. ओके, मीन्स अगर मुझे किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, याद रखना मैं टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, बैकग्राउंड की नहीं. मुझे स्क्रीन का कलर नहीं चेंज करना है, मुझे किसका कलर चेंज करना है? टेक्स्ट का. सो दैट टाइम कौन सा प्रॉपर्टी देना पड़ता है? कलर प्रॉपर्टी. और एक बात, कलर का स्पेलिंग. आप बोलोगे कि मैडम ने कलर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, बट नहीं. याद है हमने जब भी कलर का यूज किया है, सो दैट टाइम वी आर ऑलवेज राइटिंग स्पेलिंग इन दिस फैशन ओनली.
color. Here we are not going to use U. Okay, computer understands spelling of color in this way only. That's why we should always write color in this format only. Okay, हमेशा कलर का नाम इसी तरह से लिखना है तो ही वो रिजल्ट देगा. अगर आपने कलर के स्पेलिंग में यू डाला तो वो रिजल्ट नहीं देगा. ओके ओके नाउ एग्जांपल P curly braces color colon red. So what is this? If you remember, what is this? This is the syntax of CSS. In that, P is the selector and whatever written within curly braces is declaration block. And this declaration block, it is also made up of two parts, property and value. And both are separated using what? Colon, right? So in this example, P is the selector, that is paragraph tag, and property is color and value is red. Okay, so ये क्या बता रहा है कि ये एक CSS का सिंटेक्स है जिसमें P है सेलेक्टर और जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है वो है डिक्लेरेशन, उसमें कलर है प्रॉपर्टी और रेड है वैल्यू. ओके, सो इससे क्या होने वाला है? इससे we can change the color of the text to red. Whatever text is written between the paragraph tag, जो भी टेक्स्ट हम पैराग्राफ टैग के बीच में लिखेंगे सिर्फ उसी का कलर कौन सा होने वाला है? रेड. कहाँ पे होगा? आउटपुट में. ओके, आउटपुट में जो भी टेक्स्ट हम लोग ने पैराग्राफ टैग्स के बीच में लिखा रहेगा वो टेक्स्ट का कलर हमें कौन से कलर में दिखाई देगा? रेड कलर में. बाकी जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अगर मैंने उसमें कलर नहीं दिया है तो टेक्स्ट का कलर जो रहता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक वो ही दिखेगा. लेकिन जिसको दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को अप्लाई किया है, सो पैराग्राफ का कलर कौन सा आएगा? रेड में. ओके, देन let us move towards the next property, that is background color. Now in this, from name itself you will come to know that it is background, means we are going to give color to background. यानी हम लोग स्क्रीन को कलर देने वाले हैं या फिर टेक्स्ट के पीछे के बैकग्राउंड को पीछे कलर देना है. किसी टेक्स्ट को कलर नहीं देना है, सिर्फ किसको कलर देना है? उसके बैकग्राउंड में. ओके, सो इट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज. सो हम लोग को बैकग्राउंड में अगर कलर देना है तो हमें यूज करना होता है बैकग्राउंड कलर. तो बॉडी बैकग्राउंड कलर पिंक मीन्स कैन वी यूज दिस बैकग्राउंड कलर ओनली फॉर बॉडी? सिर्फ पूरे वेब पेज को कलर देना है तो ही हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन यूज दिस बैकग्राउंड कलर विद एनी टैग्स वी आर यूजिंग. सो लाइक पैराग्राफ टैग, H1 tag, bold tag, whatever tags we are going to use, for that tags we can give this background color. Okay, now in this example I am using this background color pink for body tag, so it is going to change the whole screen color to pink. Okay, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर पिंक किसको यूज किया है? कौन से टैग को दिया है? बॉडी टैग को. सो इसके वजह से क्या होने वाला है? पूरे बैकग्राउंड का कलर मीन्स पूरे वेब पेज का कलर कौन सा आएगा? बैकग्राउंड का पिंक कलर आएगा. अगर किसी टेक्स्ट के पीछे देते, जैसे पैराग्राफ में अगर मैंने बैकग्राउंड कलर पिंक दिया होता तो क्या होता? जो भी टेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ के बीच में लिखते हैं उसके पीछे, नॉट टेक्स्ट, उसके पीछे का कलर कौन सा आता? पिंक. Okay, so that is the use of background color. Now let us move towards next property is font weight. Weight से ही लग रहा है ना वजनदार. So it is used to bold text. Means using font weight we are going to make text bold, that is thicker. ओके, सो अगर मुझे टेक्स्ट को मोटा करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी. सो इट इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट और वी कैन यूज द वैल्यूज फ्रॉम 100 to 900. सो अगर मुझे टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड लिखना है, फॉन्ट वेट कोलन बोल्ड, तो वो सिंपली टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा. लेकिन अगर मुझे और भी उसको मोटा करना है तो मैं कौन सा भी वैल्यू 900 तक लिख सकती हूँ. मिनिमम इज 100 एंड मैक्सिमम इज 900. सो वी कैन यूज एनी वैल्यूज फ्रॉम
this range, okay, from 100 to 900. Okay, here the example is H1 font weight colon 300. So H1 means what? Highest level of heading. So already ये सबसे बड़ा साइज जो हेडिंग का रहता है वो आने वाला है, वो थोड़ा सा मोटा ही होता है, और उसको और मैंने फॉन्ट वेट 300 दिया तो वो और भी मोटा दिखेगा. ओके, सो क्लियर है व्हाट इज दिस फॉन्ट वेट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फॉन्ट स्टाइल. नाउ दिस फॉन्ट स्टाइल, नाम से पता चलता है स्टाइल मीन्स इट इज गोइंग टू गिव स्टाइल टू योर टेक्स्ट. ओके, सो इट इज यूज्ड टू इटलाइज टेक्स्ट. Values can be italic, normal और oblique. Means what it says, अगर मुझे टेक्स्ट को स्लैंट करना है, स्लैंट टाइप का स्टाइल देना है, so that time I can use what value? Italic. Italic and oblique are one and the same thing. Means both are going to give you slant text only. Okay. Then normal means normal. What by default जो भी normal text रहता है वो. Okay. So this is font style. For example, P font style italic. So in this we are going to make the text italic which is written within paragraph tag. यानी मैंने जो भी टेक्स्ट पैराग्राफ टैग के बीच में लिखा रहेगा वो टेक्स्ट का स्टाइल कैसे आएगा? इटैलिक मीन्स स्लैंट आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट डेकोरेशन. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड लाइन थ्रू, underline, overline, none. Now what are all these properties? This all are the values for this text decoration property. Okay, so we will see one by one. First is line through. Now what is this line through? Line through means line which is passing between the text. That is, we can also call it as strike off. Do you remember strike off? कैसा होता है स्ट्राइक ऑफ? कभी देखा है? टेक्स्ट के बीच में कभी लाइन जाता है, उसे बोलते हैं लाइन थ्रू. ओके, सो आई विल शो यू द एग्जांपल हियर. सी, हियर आई एम राइटिंग वन टेक्स्ट. दिस इज द टेक्स्ट. ओके, नाउ सपोज दिस इज द टेक्स्ट. नाउ इफ आई वांट टू गिव लाइन थ्रू, तो फिर लाइन थ्रू मीन्स क्या? टेक्स्ट के बीच से लाइन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लाइन थ्रू. ओके, देन मुझे अंडरलाइन चाहिए. अंडरलाइन ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज दैट? मीन्स नीचे, टेक्स्ट के नीचे. ओवरलाइन, ओवरलाइन क्या होता है? टेक्स्ट के ऊपर, ऊपर जो रहेगा उसे बोलते हैं ओवरलाइन. एंड व्हाट इज नन? नन, here we cannot use none. None is, it is used for links. Links पता है जो hyperlink होते हैं ब्लू कलर में, उसको एक लाइन भी होता है अंडरलाइन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होता है. सो वो जो अंडरलाइन होता है हाइपरलिंक को, अगर वो अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं वहां पे यूज करने वाली हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन. ओके, वहां पे अगर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो अंडरलाइन निकल जाएगा. Okay, now what is this example? See, P curly braces text decoration colon underline. So what is this going to do? Whatever text we are writing within bold tag, जो भी text हम लोग bold में लिखने वाले हैं वो text को underline आ जाएगा. ठीक है? So next example is H2 text decoration overline. Means whatever text you are writing within H2 tag, that text will come like overline. Overline means text के ऊपर line आएगा. Okay, like this. ठीक है? So got it? What is this? Overline, underline, line through, and none. Next property is text align. What is text align? Text align is used to align text either to left, right, center. ओके, अगर मुझे टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड बोले तो दिस साइड, राइट साइड और सेंटर और जस्टिफाई. जस्टिफाई मीन्स यू नो व्हाट इज जस्टिफाई? जस्टिफाई मीन्स दोनों साइड से सेम रहना चाहिए. अभी यहाँ पे देखो, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको जस्टिफाई नहीं बोलते हैं. जस्टिफाई किसको बोलते हैं? जो इक्वल रहेगा. कभी देखा रहेगा आपने, मीन्स बोथ
लेफ्ट साइड मार्जिन एंड राइट साइड मार्जिन जो इक्वल इसमें कर देगा उसे बोलते हैं जस्टिफाई. ओके, सो you can use any alignments to make your text left, right, center or justify. By default, always your text is placed to the left side. But if you want to change the alignment to center, right or justify, then use text align, right, center or justify. समझा? By default हमेशा text कहाँ पे आता है? Left side में. अगर मुझे text center में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? Text align colon center. अगर मुझे राइट में चाहिए तो टेक्स्ट अलाइन राइट. ओके, और जस्टिफाई चाहिए तो मोस्टली दिस जस्टिफाई अलाइनमेंट हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है तो उसको जस्टिफाई देंगे तो सब एक लाइन में, लेफ्ट साइड भी एक ही लाइन में आएगा और राइट साइड भी एक ही लाइन में. ओके, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज जस्टिफाई. नाउ एग्जांपल H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है? जो भी टेक्स्ट हम लोग H1 टैग में देने वाले हैं वो सेंटर में आएगा. ओके, सो दैट टेक्स्ट विल बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली. नाउ व्हाट इज दिस फैमिली? फैमिली मीन्स डिफरेंट फॉन्ट नेम रहते हैं. फॉन्ट के बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरे, एरियल नैरो, एरियल ब्लैक, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट की फैमिलीज है. इफ यू वांट टू चेंज दैट फैमिली देन दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द फॉन्ट्स मीन्स वही फॉन्ट फैमिली को चेंज करना. अगर मुझे एरियल ब्लैक चाहिए, एरियल नैरो चाहिए, so that I can do using what? This font family. I will write font family colon Arial black, Arial narrow, whatever you want. Okay, here see the example. P font family colon Arial means what will happen? जो भी text, whatever text you are writing within paragraph tag, that text font family will be Arial. So जो भी text हम लोग paragraph tag में लिखेंगे उसका font family Arial में आएगा. ठीक है? Okay. Then next is font size. This is used to control the size of fonts. So why we are using font size? If you want to change the size of the font, means if अगर किसी font को हमें thick करना है या फिर thin करना है, means मोटा या पतला करना है, so for that purpose we are going to use font size. Okay, so this font size, it is used to increase the size of the text or to decrease the size of the text. For example, P font size colon 10 px. Now see, what is this px? Px stands for pixel. Instead of px, what we can write? We can write pt. It stands for point. So font size 10 pt or px, it means whatever text you are writing between paragraph tag, that text will be of size 10. Okay, जो भी text हम लोग paragraph tag में लिखेंगे उसका size क्या होना चाहिए? 10 pixels. Okay, so this is font size. Next property, letter spacing. This helps in controlling the horizontal spacing between characters of text. So what this means? This means that if you want to give space between letters of text, means one word is there and in that word after each letter you want space. Okay, means अगर मुझे किसी word के बीच में यानी हर एक letter के बाद space आना चाहिए. Okay, मैंने अगर एक नाम लिखा है मॉडल. Okay, अगर मॉडल में M के बाद कुछ स्पेस चाहिए, फिर O आना चाहिए, फिर स्पेस चाहिए, फिर D, फिर स्पेस, फिर E, फिर स्पेस, फिर L. So that is called as what? Letter spacing. Means अगर वैसा स्पेस आना चाहिए तो मुझे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? Letter spacing. For example, H1 letter spacing colon 5 px. Px से instead of px we can also use pt, that is point. So what this says that whatever text we are writing within this H1 tag, that will contain letter spacing of 5 pixels. For example, I will show you the example. Suppose I am writing my name in this H1. Okay, suppose I am writing Shweta. So what will happen? After yes,
it will leave 5 pixels, then it will place H, then it will leave 5 pixels, then it will write W, then it will leave 5 pixels, then E, then 5 pixels, then T, and likewise. Okay, so this is called as what? This is called as letter spacing. Okay, so like letter spacing, one more property is there, that is word spacing. Here word spacing is not mentioned, but what is the work of word spacing? Word spacing is used to give spacing between the words. Letter spacing is used to give spacing between the letters, and word spacing is used to give space between the words. समझा क्या है लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग? अगर मुझे लेटर्स के बीच में स्पेस चाहिए तो मैं लेटर स्पेसिंग यूज करूंगी. अगर मुझे 2, 3, 4 ऐसे कितने भी वर्ड्स लिखे हैं और हर एक वर्ड के बाद मुझे स्पेस चाहिए 10 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, वॉट एवर स्पेस यू वॉन्ट, फॉर दैट मैं क्या यूज करने वाली हूँ? वर्ड स्पेसिंग. ओके, नाउ let us move towards the next property. Next property is background image. So what is this background image? This background image is used to set an image as a background of your web page. Means अगर मुझे background में image आना चाहिए, पूरे screen के background में image चाहिए या फिर किसी text के पीछे image चाहिए. So for that I am going to use which property? Background image. Okay, in this example I am giving background image for body. तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने बॉडी टैग में बैकग्राउंड इमेज का यूज किया है तो पूरे स्क्रीन पर क्या आ जाएगा? इमेज आ जाएगा. ओके, बैकग्राउंड फुल इमेज का आ जाएगा. सो हियर सी द सिंटैक्स हाउ टू राइट दिस बैकग्राउंड डैश इमेज कोलन URL, then bracket, then inverted comma, then this is what this background.jpg. Here I have written dummy path. Instead of this we have to write the location or path of our picture or image. Okay, whatever image you want, that image location or path you have to copy and paste over here. मैंने क्या बोला अभी? अगर मुझे बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो इमेज का पाथ या लोकेशन कहाँ से लेते हैं हम लोग? जहाँ पे वो पिक्चर रहेगा वहां पे जाके उसका लोकेशन कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं. तो इमेज का जो एक्सटेंशन रहता है वो .jpg होता है, .gif होता है और .png भी होता है. तो इनमें से कोई भी एक्सटेंशन का इमेज रहेगा उसका लोकेशन हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं. ओके, दिस इज अबाउट बैकग्राउंड. नेक्स्ट इज padding. What is padding? This property is used to add blank spaces around the content of the element. What is the meaning of this? This says that if you want to give blank spaces, okay, means अगर मुझे text के ऊपर, नीचे, left में, right में blank space देना है, so for that purpose I am going to use which property? Padding property. Okay, so these are all the different elements of the padding, or we can say these are all are the values. No, these are not the values. Values means we are going to use 50 pixel, 30 pixel. These are the values, and this all are the properties. Padding left. Padding left means what? Left side में मुझे space चाहिए. Now this is left side. Okay, so यहाँ पे अगर मुझे space देके use padding left. Padding right. अगर मुझे राइट साइड में स्पेस चाहिए टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है और इसके राइट साइड में मुझे स्पेस चाहिए तो आई विल यूज पैडिंग राइट. पैडिंग टॉप मीन्स टॉप साइड में, टॉप में अगर मुझे स्पेस चाहिए और बाद में टेक्स्ट लिखना है सो आई विल गिव पैडिंग टॉप. पैडिंग बॉटम मीन्स नीचे से स्पेस. ओके, टेक्स्ट के नीचे जो भी स्पेस रहेगा उतना स्पेस अगर मुझे छोड़ना है सो आई विल यूज पैडिंग बॉटम. ओके, योर सी एग्जाम्पल इज H2 padding left 50 px, padding top 50 px, padding right 30 px, padding bottom 40 px. What this says? This means that whatever text you are writing within this H2 tag, that will be having space from left side 50 pixels, from top 50 pixels, from right 30 pixels, and from bottom 40 pixels. So I will show you example also. Suppose for that I will draw the screen. Okay,
So suppose this is the screen of your computer. Then left 50 pixel means what will happen from left side. This left side से 50 pixel छोड़ेगा. यहाँ पे ऐसा pixels count करके वो यहाँ पे 50 pixel छोड़नेगा. फिर टॉप से 50 पिक्सल छोड़ेगा और यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा. ओके सो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं वो टेक्स्ट. ओके नथिंग, आई विल जस्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके सो यहाँ से उसने 50 पिक्सल छोड़ा, यहाँ से 50 पिक्सल छोड़ा. दिस साइड सॉरी यहाँ पे मैंने पिक्सल्स 30 दिया है तो फिर 30 पिक्सल छोड़ेगा ना. यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा. ओके लाइकवाइज यहाँ से 30 पिक्सल छोड़ने का और नीचे से कितना 40 पिक्सल. सो दिस इज कॉल्ड एज पैडिंग, मीन्स गिविंग स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड एंड फ्रॉम राइट साइड. ओके दैट इज कॉल्ड एज पैडिंग. I will rub this. So hope all of you understood what is padding. Okay, now next property is border. Now what is the use of border? This property adds a border to the web page element. Means whatever text you are writing, if you want to give border to that text, then we can use which property? Border property. So there are different elements of border. They are solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset, outset. So all these are the values of what? Border. ये सब borders के values है जो हमें लिखने हैं. Okay, solid means it will be a thick line. Okay, dotted means dotted lines में border आएगा. Means dots आएंगे. Okay, border में. Dash means dash के जैसा border आएगा. Double means double line का border. Now this ridge, groove, inset, outset, this all four are the 3D. Okay, these are the 3D lines which we can see in the output. So this ridge and groove looks similar, this inset and outset looks similar. So all this we will see in the coding, how that output looks. From that you will come to know what it is actually. Okay, so let us see the example of this h2 border dashed. Means what? Whatever text you are writing within this h2 tag, that will be having the border डैश बॉर्डर. ओके जो भी टेक्स्ट हम लोग H2 के बीच में लिखने वाले हैं उसको कौन सा बॉर्डर रहेगा? डैश का बॉर्डर. आई विल शो यू हाउ डैश बॉर्डर कम्स. सी डैश बॉर्डर मीन्स लाइक दिस. ओके this is called as dash border. Now B is having the border double. Double border means what? This is one and the another one. Okay, this is it should be straight line. Okay, this is double border. Then next is solid. Solid means thick border. Okay, likewise ऐसा thick करके आएगा. That is solid. Okay, next is dotted. Dotted means what? Dot. Likewise this is a dots आएगा. Okay, this I don't know whether you are able to see or not. Okay, this is like a dot. ये डैश के जैसा दिख रहा है, एक्चुअली डॉटेड है. ओके सो लाइकवाइज डॉटेड आएगा. ओके आई विल रब दिस. केम टू नो व्हाट इज डबल लाइन, डैश, देन सॉलिड, dotted, all this clear? That is the border. Okay, so last one. Last is margin left. Now what is this margin left? It sets margin area on the left side of the element. Means margin left क्या करने वाला है? Left side. मार्जिन के लेफ्ट साइड में वो उतनी स्पेस छोड़ेगा जितना हम लोगों ने दिया रहेगा. ओके मीन्स लेफ्ट मार्जिन के साइड में अगर मुझे स्पेस चाहिए, सो दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज मार्जिन लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल मार्जिन लेफ्ट 30 px. So this is going to leave 30 px of space from the left side of the margin. Okay, and then the text will be appearing. क्या बोला मैंने?
जो भी टेक्स्ट हम लोग बोल्ड केस में लिखने वाले हैं वो टेक्स्ट लेफ्ट साइड से 13 पिक्सल्स छोड़ेगा और फिर डिस्प्ले होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन लेफ्ट. So all these are the properties, all 13 properties we have studied. Okay, all 13 properties we have studied here, but these 13 properties are listed in your book. That's why I have taught you all these 13 properties plus one, that is word spacing, that is 14th property. Again, one more I am going to use border color also. If you want to give color to the border, that property also we can use. That is 15th property. Okay. There are many more such properties in CSS, but whatever is listed in your syllabus that I am teaching you. Okay, but there are many more. It is vast properties are used in CSS. Okay, so I hope this all you understood. By seeing the example, next we are going to see the coding of these properties. By using all these properties we will see the coding and the output. So एक बार अगर मैंने कोडिंग कर दिया, एक बार हम लोग कोडिंग करेंगे, फिर उसका आउटपुट देखेंगे, फिर हम लोग को उसका रिजल्ट समझ में आता है कि ये प्रॉपर्टी क्या काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या काम कर रहा है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द कोडिंग. This is the coding of all the CSS properties which we are going to use. So see, here also I am using internal style sheet. Why it is internal style sheet? Because this style tag, it is enclosed within the head tag. That's why it is the internal style sheet. So this is just for example. Now let us see one by one. Here I am using H1 and padding left 150 pixels. मीन्स क्या होने वाला है, जो भी हेडिंग टैग में हम लोग लिखने वाले, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 150 पिक्सल्स, मीन्स वो लेफ्ट साइड से 150 पिक्सल छोड़ने वाला है, राइट साइड से 13 पिक्सल्स, मीन्स फ्रॉम राइट साइड 13 पिक्सल्स. पैडिंग टॉप मीन्स टॉप से 50 पिक्सल्स छोड़ के आएगा. देन पैडिंग बॉटम 30 मीन्स नीचे से 30 पिक्सल्स. ओके, सी यू कैन यूज px pt, नथिंग विल बी हैपन, बोथ आर सेम. सो मैंने H1 में ये प्रॉपर्टी यूज किया है पैडिंग का. नेक्स्ट बोल्ड. फॉर बोल्ड आई एम यूजिंग विच प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज इज 50 पिक्सल्स. देन अगेन फॉर बोल्ड आई एम यूजिंग लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, यानी हर एक लेटर के बाद 50 पॉइंट्स छोड़ के दूसरा लेटर आएगा. और बोल्ड में हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेलकम. तो वेलकम में W के बाद 50 पिक्सल्स छोड़ने के बाद E आएगा, फिर 50 पिक्सल छोड़ेगा, यल आएगा. ऐसे सब लेटर्स के बाद वो 50 पिक्सल छोड़ के आने वाला है. नेक्स्ट इज H2, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. यो आई एम यूजिंग विच प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमने लोग लिखा है H2 में, दिस इज मॉडल कॉलेज, तो ये कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा. ओके, नेक्स्ट इज बॉडी बैकग्राउंड इमेज, मीन्स बॉडी के बैकग्राउंड में क्या आना चाहिए, इमेज. ये जो लोकेशन है ये मैंने मेरे पीसी का लोकेशन कॉपी पेस्ट किया है. मेरे पीसी में जो भी इमेज था उसका लोकेशन मैंने कॉपी और पेस्ट किया. ओके, नेक्स्ट इज आई, that is in this I am using which property, font weight 900, text decoration overline, font family calibre, margin left 50 pixel. तो मैंने आई में CSS इन HTML लिखा है, इसके लिए मैंने बहुत से प्रॉपर्टीज यूज किए हैं. इसका फॉन्ट वेट 900 होना चाहिए, मीन्स उसका थिकनेस 900 होना चाहिए. देन टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, मीन्स इसके टेक्स्ट के ऊपर CSS इन HTML, इसके ऊपर क्या आएगा, ओवरलाइन. ओके, लाइन आएगी टेक्स्ट के ऊपर. फॉन्ट फैमिली कैलिबरी, फिर ये कौन सा स्टाइल में आएगा, कैलिबरी स्टाइल. मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स, मीन्स लेफ्ट साइड से 15 पिक्सल्स छोड़ के CSS इन HTML डिस्प्ले होने वाला है. तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं कैसा दिखता है. सी, दिस इज द आउटपुट. ओके, ये जो हमने हेलो मीन्स H1 के लिए पैडिंग दिया था, तो ऊपर से कितने पिक्सल्स थे, उतने पिक्सल्स यहाँ पे छोड़े हैं. लेफ्ट से 150 था, उतने छोड़े हैं. अभी इसमें बहुत बड़ा टेक्स्ट नहीं है, इसलिए हम लोग को राइट से छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो नहीं समझ में आएगा. जब हम लोग पैराग्राफ यूज़ करेंगे और राइट साइड का पिक्सल्स देंगे तो आइडिया क्लियर हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस वेलकम, लेटर स्पेसिंग इज यूज्ड. ओके, हर एक लेटर के बाद हाउ मेनी पिक्सल्स इट इज गोइंग टू लीव, 50 पिक्सल्स. यो सी, दिस इज CSS इन HTML. लेफ्ट मार्जिन से उसने 50 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स कुछ तो हमने लिखा था वो छोड़े हैं. फिर ओवरलाइन, फिर फॉन्ट थोड़ा सा मोटा है यानी 900,
ओके देन नेक्स्ट मॉडल कॉलेज H2 सेंटर में एंड बैकग्राउंड में इमेज आए. ओके दिस इज द एग्जाम्पल. अब थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं. यहाँ पे शायद मैंने बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है. सो लेट्स यूज बॉर्डर फॉर दिस बोल्ड टैग यानी वेलकम को बॉर्डर आएगा. ओके सो लेट्स सी colon. Let us use solid first. I will show you one by one. ओके यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे भी यूज़ करते हैं और H2 में भी यूज़ करके देखते हैं. ओके बॉर्डर सॉलिड यूज़ किया है. यो आई एम यूजिंग सॉलिड सो यो मैं दूसरा यूज़ करके देखती हूँ. बॉर्डर डबल DOUBLE. ओके नाउ जस्ट सेव योर कोडिंग एंड सी द आउटपुट. Refresh it. So see the output. See this is border which is solid means thick. Then this is double line border. Okay can you see this difference? See now अभी यहाँ पे solid और double दिया था. अभी फिर से change करते हैं. Okay now what we will do, instead of solid now here I will use dashed. This dash में आना चाहिए and here I am going to use dotted. Okay again save your file and check the output. Refresh it. See this is dash, this is dotted. Okay this is the difference. Now again let's check ridge and groove how it looks. RIDGE ridge and here I will use groove. Save the file, see the output. Refresh the file. See the output. So this is 3D line. Okay 3D border. Okay so see this ridge and groove looks somewhat similar only. So you won't be able to see, if you can see it clearly, here is some difference and here is also some difference. Okay so this is ridge and groove. Next last two borders are inset and outset. See in inset what will happen, inset it is giving you dark border and this side it gives you light, and outside is opposite of that. In upward side it gives you dark border and in the lower side it gives you some light border. Okay so this is the difference between inset and outset. So I hope this all things are clear to you. Now practice all the CSS properties and then see the output. If you face any problem or any doubt then please ask me. Okay now this much for today. In next lecture we are going to study different types of CSS. Till then just all of you study well. Okay thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe, and happy learning.